Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, let us translate unsolved Urdu paragraph into English. Paragraph number 3. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों और गरीबों पर बहुत मेहरबान थे. The Holy Prophet, peace be upon him, was very kind to the orphans and the poor. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी यतीम थे. He, peace be upon him, himself was an orphan. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नरम दिल थे. He, peace be upon him, was very kind hearted. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को यतीमों की अच्छी देखभाल करने की तलकीन करते थे. He, peace be upon him, would advise his companions to look after the orphans well. फतह मक्का के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे दुश्मनों को मुआफ़ कर दिया. On the conquest of Makkah, he, peace be upon him, forgave all his enemies. हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल पर अमल करना चाहिए और अपने दुश्मनों को मुआफ़ कर देना चाहिए. We should also follow the example of him, peace be upon him, and forgive our enemies. अगर सब लोग ऐसा सोचना और अमल करना शुरू कर दें तो ये दुनिया जन्नत बन जाएगी. If all the people start thinking and acting like this world will become a paradise. Dear students, for your assistant, the vocabulary of difficult words is given below. Watch the video carefully and after that try to solve the paragraph by yourself. Stay blessed, and the links of the next paragraphs are given in the description box. Stay blessed. Allah Hafiz.